All of you, today we will do chapter 18, house like this. In this chapter we will study different types of houses around us. Now in early times, as you know, people used to live in jungles and they stay in caves. In early times, man used to roam around in search of food. He used to live in caves. But nowadays, how do we live? We have proper houses. And why we build houses? Houses protect us from sun, rain, cold, wild animals and thieves. Also, houses keeps us safe and provide us a comfortable feeling. We live with our loved ones in a house and we can keep our belongings in a house safely. Now, houses are built according to the climate. Now, according to different climates, houses are built. If there is very much cold and there is a snow all around, what type of house will be there? There will be an igloo. And if there is very much rain, lot of rain in your places, then what type of house you will build? You will build a high house or a stilt house. All type of houses we will study now. So the different classification is kacha house. As the name suggests, kacha house. Kacha house is temporary house and it is made up of mud, whereas permanent house is called as pakka house and it is made up of brick, cement. Movable house, a house that can be moved from one place to another, it is called as movable house. Then fourth is special houses that we will study now. Now first type, we have temporary houses. As the name suggests, such type of houses are usually found in villages. They are made up of mud, bamboo, leaves, straw, etc. तो टेम्परेरी हाउसेस कौन से होते हैं? जो मोस्टली कहाँ मिलते हैं? विलेजेस में मिलते हैं और मिट्टी से, लीव से, स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं. ये वाले हाउसेस बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और जब रेन होती है या तेज़ हवा आती है तो इनके क्या हो जाते हैं? दे नीड टू मेंड. इनको रिपेयर करना पड़ता है या ये क्या हो जाते हैं? ब्रोक हो जाते हैं. मड हाउस इज़ बिल्ट इन हॉट प्लेस. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे मड हाउसेस बनाएंगे क्योंकि मिट्टी क्या देती है? ठंडक देती है. द वॉल्स ऑफ दीज हाउसेज आर थिक एंड प्लास्टर्ड विद मड. दिस कीप्स दैम कूल. क्योंकि वो क्या देती है? ठंडक देती है. इसलिए जैसे राजस्थान है या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे कैसे हाउस बनाए जाते हैं? मड हाउसेस बनाए जाते हैं. सेकेंड इज आर परमानेंट हाउसेस. द हाउसेज इन विच यू लिव इज परमानेंट हाउस, जो किससे बने होते हैं? सीमेंट से, ब्रिक्स से बने हुए होते हैं जिसमें मेटल यूज हुआ होता है. दीज हाउसेज कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स एंड दीज हाउसेज आर नॉट अफेक्टेड. इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता चाहे जितनी मर्जी तेज विंड आ जाए या हैवी रेन्स आ जाए. और मोस्टली इस तरह के हाउसेस कहाँ पे मिलते हैं? बंगलो या मल्टी स्टोरेड सिटीज़ में मिलते हैं. अब जिस घर में अगर सिंगल स्टोरी है, ऊपर के फ्लोर नहीं बने हुए, उसको आप क्या कहोगे? सिंपली सिंगल स्टोरी. और ऐसे घर जहाँ पे फ्लैट्स हैं, ठीक है, और बड़े सारे फ्लोर्स बने हुए हैं इस तरह से, तो उसे आप क्या कहोगे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहोगे. मूवेबल हाउसेस नेक्स्ट हैं आपके. मूवेबल हाउसेस, मूवेबल हाउसेस होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं? मूव हो सकते हैं. मूवेबल हाउसेस वी हैव शिकारा or houseboats. In Kashmir, there is a Dal Lake in which very beautiful houses are made on boats. They are called as shikara or houseboats. Tourists come and enjoy their stay in these houseboats. Now, in Dal Lake in Kashmir, there are beautiful houseboats in which tourists come and stay in these boats. So these boats are movable houses. By what do you understand by movable houses? A house that can be moved is called as movable houses. Then we have tents. अब जो tents हैं, in this type of house is used by wandering people. जो भी people हैं जो move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे NCC कैंडिडेट्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, जिन्हें माउंटेन्स पे ट्रैक करना पड़ता है,
वो सारे क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ टेंट सो दैट वेन एवर वेयर एवर दे रिक्वायर्ड a tent, they build their house there and stay inside the tent. Next is your karwa. Karwa is like a moving house in a car. Mostly many people who used to travel from one place to another use a caravan. It is a house on wheels. The wandering people live in this house. They travel in these houses themselves. For them it is a vehicle as well as it is like their house. Our fourth category is special houses. Now what are the special houses? Special houses, first is your wooden house. Such houses are made in hill station where it rains heavily and snows squall. These houses are made up of wood or sometimes stones. They have sloping roof so that rainwater and snow can move downwards. In Manali, Shimla, etc., we have such houses. These houses stay warm and comfortable even in winter. So we can see wooden houses in Shimla. At that places, what we have wooden houses that is made up of wood and stone. Now second type of houses, special houses, is igloo, and it is a house made up of blocks of ice. From which material igloo is made up of? Igloo is made up of, remember, it is made up of blocks of ice. These are found in snow covered area. People called Eskimos live in these houses. तो जो इग्लू है वो क्या करते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है वहाँ पे जो है ये बनाए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वार्म होते हैं फ्रॉम इनसाइड. नेक्स्ट है आपका स्टिल्ट हाउसेस. जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे किस तरह के हाउसेस बनाए जाते हैं, स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसके ऊपर है बना हुआ स्टिल्ट हाउस, ये पोल्स के ऊपर बना हुआ है, ताकि जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये पोल्स के ऊपर बना होता है ताकि जो पानी है वो घर के अंदर ना आ सके. सच टाइप ऑफ हाउसेस आर बिल्ड in places like Assam where it rains heavily. These houses are made of wood and bamboo. It is made almost 10 to 12 feet above the ground to avoid floods. A ladder is used to enter the house. The ladder is removed at night so that thieves or animals could not enter the house. Now such type of houses have a ladder and we remove it at night so that thieves or animals just not enter into the house. It has a sloping roof so that rainwater can flow off. This was all about our chapter in which we have discussed various kinds of houses. I hope you understand it. Thank you so much. Have a nice day.